Hello everyone, so it's a day 76 of our live study with me. And good morning everyone. Have a wonderful day. And I welcome everyone in my stream. Come and let's study. Just come, okay? Let's start the study. I'm waiting for you all. Just come. It's a 4:30 and we are here. So it's a time to start the stream. आ जाओ सारे के सारे. मैं भी सेटअप वेटअप कर लेता हूँ और फिर पढ़ता हूँ. It has a click of. It is a click of. Yes, it is a. It has a. Lack of. जी कैस्टवर जी हाय. अनुराग जी हाय. हेलो. कैसे हो? जी हाय. हेलो. जी तहता जी हाय. जी तेगर हाय ब्रो. जी कैस्ट भी आ जी हाय. Yes bro, so it's a day 76. Caster, you have subscribed. Thank you so much, bhai. So it's a day 74. Sorry, day 76 of our live study with me. And Messenji, you are donating 1 lakh rupees, 1 lakh whatever, okay? Okay, so donate it to someone who need. I subscribed and like TVRG. Thank you, bro.
I like your videos. Thank you so much, bhai. Thank you. Okay, so I'm gonna to pink guess to guess what? I am moving to LA. Where, Lucknow or what? Los Angeles. Los Angeles. But why? Why are you moving to Los Angeles? I think the condition of there was not so good. जी काजल जी हेलो. एंड इसी के साथ साथ हमारा 30 डेज का, सॉरी 90 डेज का जो फिटनेस चैलेंज है वो भी चल रहा है. आई जस्ट पिन द लिंक, यू कैन आल्सो चेक आउट ऑफ दैट. कैन आई गेट द 10 piece ऑफ व्हाट? These nuts. Subscribed for me means I didn't get that. Okay, if you have subscribed for that, that's also good thing.
You see me, Castry? No, I haven't seen you yet. Okay, Kajal. Have hello, hi. For being wholesome, I'm gonna subscribe. I'm going to be the biggest crab alive. Okay, so I've just make the setup and I love your life. Thank you, bhai. Castry Biaji. First name Avia. क्लास 10 बोर्ड्स हैं 15 days में. जी फर्स्ट नेम जी वेलकम टू आवर स्ट्रीम भाई. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम. 15 days बचे हैं भाई, तो अभी 7 दिन तक PYQs करो. और फिर अगर जब PYQ अच्छा खासा तैयार हो जाए तो क्वेश्चंस करना, ठीक है. सॉरी, सैम्पल पेपर सॉल्व करना विद बाउंड टाइम लिमिट. ठीक है, तुम्हारे मार्क्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा. लास्ट टाइम में सिर्फ यही करो बस. एंड सोने से पहले और एक बार जो शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज कर लेना, और उठते ही उसको देख लेना बस. बाकी क्वेश्चंस करो. बिल्कुल आ सकते हैं यार. हमें प्रिपरेशन के ऊपर है ना यार. बोर्ड कौन सा है? बोर्ड यूपी बोर्ड है, तो यार इट्स क्वाइट टफ. CBSE है तो बहुत आसानी से आ सकते हैं. ICSE है तब भी आ सकते हैं. ICSE बिल्कुल आ सकते हैं यार. बस PYQs कर लो
और लास्ट में अगर जैसे अगर अभी नहीं पी वाई कुछ अच्छे से तैयार है तो लास्ट के 3 डेज, लास्ट के 2 डेज, सॉरी 2 डेज तो बहुत कम हो जाएगा, बट लास्ट के 3 डेज क्या करो, एटलीस्ट 7 सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाओ। ठीक है, टाइम लिमिट में उसमें को ऑब्ज़र्व करो कि मैं क्वेश्चन पेपर कहाँ से शुरू करूँ। ठीक है, और जैसे पहले कहाँ शुरू किया जाए, कहाँ से नहीं किया जाए, ये सब इम्पोर्टेंट है, उसको एनालाइज करना। ठीक है, किस क्वेश्चन को कितना लिखा जाए, कितने क्वेश्चंस को लिखने से मैं मेरे क्वेश्चन छूट नहीं रहे हैं, सब सारी चीज़ें। ठीक है, एग्ज़ाम में ना सिली मिस्टेक्स ना करना, मार्क्स अच्छे आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्री में है क्या जो प्रॉब्लम है, मतलब हाँ ऑब्वियसली 10th के लेवल पे, बट 11th में जब आओगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी 3-4 फॉर्मूला है बस, उसको पढ़ लो यार ना, तो अभी तो टाइम भी है। प्रूविंग उतनी आसान है यार, एक बार है ना, उसके भी अगर देखो पीवाईक्यूज देखो तो फिक्स क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसको पढ़ लो बस, उसको प्रैक्टिस कर लो, और जो नहीं आता उस पर क्यों इतना फोकस, जो आता है उस पर फोकस करो, जो आता है वो ना गलत हो बस। सिली सिली मिस्टेक्स ना करना बस। जी कातिल जी भाई, वेलकम टू आवर स्ट्रीम, लव यू टू ब्रो। क्या सब पढ़ते हैं ना, देखो फर्स्ट नेम वही आपको देखकर मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू भाई, थैंक यू एंड स्टडी। ठीक है, फोकस करो खुद के ऊपर। मैं भी आज चलता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भाई। और इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सप्लेन केमिकल सेप शील्डिंग एंड डिशील्डिंग एंड हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बाय बाय फर्स्ट नेम जी, बाय भाई। लाइक वीडियोस, थैंक यू भाई। कैस्ट वी आर जी, थैंक यू। एन हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी electromagnetic radiations radio frequency electromagnetic radiations with the nuclei of molecules placed in a strong magnetic field. Principle of NMR spectroscopy is the nuclei carry a charge. This charge is spin on the nucleus on the nuclear axis. The nuclei carry a charge. This charge is spin. The nuclei carry a charge. This charge is spin on the nuclear axis, and this जी कैस्ट वी आर जी, हाय। Yes, hey, do you wanna say something? Just say. The nuclear carry a charge. This charge spin on the nuclear axis, and the circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. ठीक है, मैंने मार। Can you subscribe what? Nuclear magnetic resonance frequency and हमारा spectroscopy. This is the nuclear carry a charge. The charge spin on the nuclear axis. The nuclear carry a charge. The charge spin on the nuclear axis, and the circulation of nuclear charge and the circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. ठीक है, and this is no field energy gap corresponds to radio frequency. The nuclei are electrically charged. No field external magnetic field.
Okay, so let me check out. Hmm. Are you saying to search it on YouTube and subscribe, or just your channel who has just 3 subscribers? STVRR. Yes, bro, that's only you have channel and nothing. Yes, I seen that. Okay. Why are you asking about such much, so much proof? Just believe me. Just check your subscribers, okay? ENMR spectroscopy. Second. What is the function of NMR spectroscopy? Explain chemicals of shielding and deshielding. So, energy levels of nucleus is big of quantum number. These are the two figures that I can draw. Here, this is the formula. Flipping up the proton and
The nuclei are electrically charged and many have a spin that causes them to behave like magnet. A nuclei with a spin at higher energy generates a magnetic field to the opposite direction to the external magnetic field. Energy gap corresponds to radio frequency. A nucleus with a spin at lower energy generates a magnetic field in the direction of the external magnetic field. Study of NMR spectrum. The number of signals, the position of the signal, the intensities of the signal, and the splitting of the signal. The number of signals is this. Chemical shift. It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons and the signal of the reference molecule. Okay. Shielding shifts the absorption of field. Shielding shifts the absorption of field, and deshielding shifts the absorption downfield. Shift the absorption downfield. And देखो, shielded protons have lower resonant frequency and smaller chemical shift values. Shielded protons have lower resonant frequency. Shielded protons have lower resonance frequency and smaller chemical shift values. Shielded protons have lower resonance frequency and smaller chemical shift values. Deshielded protons have higher resonance frequency and larger chemical shift values. The intensities of the signal, the splitting of the signal, optical astigmatism. Yeah, करेगी. Spin chemical shift shielding and deshielding in NMR spectroscopy. Yeah, shielding shifts the absorption upfield and the deshielding shifts the absorption downfield. Shielding protons have lower resonance frequency and smaller chemical shift values, and deshielding protons have higher resonance frequency and larger chemical shift values. Shielding: when electron shield a nucleus from external magnetic field, the effective magnetic field experienced by the nucleus is reduced. This causes the nucleus to resonate at lower frequency, resulting in an upfield shift. Wow, amazing. Now, this causes nucleus to resonate at lower frequency, resonance lower frequency, resulting in an upfield shift, resulting in an shielding. Electron with the n group are present near a nucleus. They pull the electron density away from the nucleus, reducing its shielding. The in this increase the effective magnetic field experienced by the nucleus, causing it to resonate at higher frequency, resulting in a downfall. Wow, it's an amazing definition it is. Let me write it. दिल के क्या रांझे चलो. When
electrons shield the nucleus from external magnetic field. An electron shield a nucleus from external magnetic field. When electrons shield the nucleus from external magnetic field, the effective magnetic field experienced by the nucleus is reduced. The effective magnetic field experienced by the nucleus is reduced. This causes the nucleus to resonate at lower frequency. This causes nucleus to resonate at lower frequency. Resonate at lower frequency. Resonate at lower frequency, resulting in an upfield shift. Resulting in an upfield shift. Descending. Descending. When electrons shield the nucleus from external magnetic field, electrons with the group are present near a nucleus. They pull the electron density away from the nucleus, reducing its shielding. An electron withdrawing group is present near a nucleus. They pull the electron density away from the nucleus. They plug the electron density away from the nucleus. They pull the electron density away from the nucleus, reducing its shielding. They pull the electron density away from the nucleus, reducing its shielding. Reducing its shielding. This increases the effective reduction of shielding. Electron beta group is present near the nucleus. They pull the electron density towards the nucleus, reducing its shielding. Okay. This increases the effective magnetic field experienced by the nucleus. This increases the electron density nucleus, reducing its shielding. This increase the effective magnetic field. This increase the effective magnetic field experienced by the nucleus. This increase the effective magnetic field experienced by the nucleus. This increase the effective magnetic field experienced by the nucleus, causing it to resonate at higher frequency. Causing it to resonate at higher frequency.
frequency resulting in a downfall shift. Causing it to resonate at higher frequency in a downfall shift. In a downfall field shift, right. If it's in a field field causing it to resonate at higher frequency in a downfield shift. Downfield shift. From the electron near the nucleus that pull the electron density from the nucleus, reducing its shielding. This increases the effective magnetic field experienced by the nucleus. This increases the effective magnetic field experienced by the nucleus, causing it to ठीक है causing it to resonate at higher frequency in a downfall in a downfield shift. Downfield shift. Okay. Okay. What is the next question? Chemical shift shielded. Shield field on field ppm. chemical shift is equal to ये होता है chemical shift होता है I don't know what is this but define optical and discuss the basic principle of IR spectroscopy. Question number 4. Discuss the basic principle of IR spectroscopy. Discuss the basic principle of IR spectroscopy. Explain the different types of molecular vibrations taking place in IR spectroscopy. Explain the different types of Discuss the basic principle of IR spectroscopy. Discuss the basic principle of IR spectroscopy. Explain the different types of molecular vibrations. Types of molecular vibrations taking place in IR spectroscopy. Taking place in IR spectroscopy, infrared spectroscopy. ठीक है बढ़िया आंसर. Discuss the basic principle of infrared spectroscopy. Explain the different types of molecular vibrations taking place in the infrared spectroscopy. Okay, so this is infrared spectroscopy. Infrared deals with the interaction of infrared radiations with matter. This masses of atoms within a molecule, strength of the bond, the arrangement of
Hmm. Discuss the basic principle of IR spectroscopy. Okay. Explain the different types of molecular vibrations taking place in the IR spectroscopy. Molecular vibrations कितने प्रकार के होते हैं? When infrared light is passed through the sample, the vibrational and rotational energies of the molecules are increased to give vibrations. Two kinds of fundamental vibrations are stretching vibrations and the bending vibrations. ठीक है. हाँ, इसमें भी दो होते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल. इसमें भी दो होते हैं, इन प्लेन बेंडिंग एंड इन आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग. इन प्लेन बेंडिंग में सीजर्स रॉकिंग, आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग में बैगिंग एंड ट्विस्टिंग. ठीक है. या सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है. Infrared spectroscopy is the infrared spectroscopy is concerned with the study of absorption of infrared radiation which cause vibrational transition in the molecule. Hence, IR spectroscopy, also known as vibrational spectroscopy. Infrared spectra gives valuable information about functional groups and bonds present in a compound. ठीक है. IR spectroscope principle. So, what is the principle of IR spectroscopy? At ordinary temperature, the molecules are generally in their lowest vibrational energy levels and are vibrating with its natural frequency. When sufficient amount of energy in the form of infrared radiations equal to difference between two vibration levels is applied to the molecule, and when the natural frequency of the molecules becomes equal to the radiant frequency, that is IR radiations, then the absorption takes place and vibrational transitions occurs. Criteria for a compound to absorb IR radiations. ठीक है. Here it is. And now this is basically the principle of the IR spectroscopy, and no need to write, no need to learn or something like बहुत ज़्यादा. ठीक है. just learn इतना ज़्यादा. IR spectroscopy is concerned with the study of absorption of infrared radiations which causes vibrational transition in the molecule. Discuss the basic principle of IR spectroscopy. Basic principle of IR spectroscopy. At ordinary temperature, the molecules are generally at their lowest vibrational energy. At ordinary temperature, the molecules are at ordinary temperature, the molecules are generally in their lowest vibrational energy. Lowest vibrational energy. ठीक है. At ordinary temperature, the molecules are generally at lowest vibrational energy levels and vibrating with the natural frequency levels and vibrating with the natural frequency. and vibrating
vibrating with its natural frequency. A sufficient amount of energy in the form of infrared radiations when, okay, when sufficient amount of sufficient amount of insufficient amount of energy na? Insufficient amount of energy in the form of infrared radiations, sufficient amount of energy in the form of infrared radiations in the form of infrared radiations equal to difference between two vibration levels, equal to difference between two vibration levels, ठीक है, when sufficient amount of energy in the form of infrared radiations sufficient amount of energy in the form of infrared radiations is applied to the molecule, and then supplied to the molecule is supplied to the molecule is supplied to the molecule is supplied to the molecule, yeah, when sufficient amount of energy in the form of infrared radiations equal to the difference between two vibrational levels is applied to the molecule, and when the natural frequency of the molecule becomes equal to the radiant frequency, and when the natural frequency of the molecule natural frequency of the molecule equal to the radiant frequency, equal to the radiant frequency of molecules when the natural frequency of become molecules becomes equal to the radiant frequency becomes equal to the radiant frequency, then the absorption takes place and vibration transition occurs. Frequency of molecules become equal to the radiant frequency, that is infrared radiations. Then the absorption takes place and vibration transition occurs. Then the absorption takes place. The absorption takes place and vibrational transition occurs. Vibrational transition occurs. ठीक है. At ordinary temperature, the molecules are generally in their lowest vibrational energy levels. At ordinary temperature, the molecules are generally at their lowest vibrational energy levels and vibrating with its natural frequency. When sufficient amount of energy in the form of infrared radiations that is equal to the difference between two vibrational levels is applied to the molecule, and when the natural frequency of the molecule becomes equal to the radiant frequency, then the absorption takes place and vibrational transition occurs. This is the principle of this. And to get this, the principle of infrared spectroscopy criteria. Correct wavelength of radiation change criteria for a compound to absorb infrared radiations. There are two essential criteria for a molecule to be infrared active are: first, correct wavelength of radiation, change in dipole moment,
IR deals with the interaction of infrared radiations with matter absorption in the infrared region due to changes in vibrational rotation levels and radiation with the frequency range less than 100 centimeters are absorbed. Molecular rotation takes place in the substance. Molecular vibrations are set in when more energetic radiation in the region 10 to the power 4 to 10 to the power square centimeter inverse is passed through a sample of substance. Clearly, a single vibrational energy change is accompanied by a large number of rotational energy changes. Thus, the vibrational spectra appear as vibrational rotational bands. In infrared spectroscopy, the observed energy brings about predominant changes in the vibrational energy, which depends upon masses of the atoms present in a molecule and the distance of the bond and the arrangement of atoms within the molecules. This is brainstorm, but criteria for a compound to absorb. And so we can write this. Okay. As criteria for a compound to absorb radiation. Criteria for a compound to absorb infrared radiations. Criteria for a compound to absorb radiations, that is the two essential criteria for a molecule to be infrared active are the two essential criteria the two essential criteria for a molecule to be infrared active are take the two essential criteria for a molecule to be infrared active are first a correct wavelength of radiation, correct wavelength of radiation, and दूसरा change in dipole moment. Explain the different types of molecular vibration take place with the molecules. ठीक है molecular vibrations होता क्या है पहले देखते हैं molecular vibrations. Due to increase in vibrational and rotational energies of the molecule, two types of fundamental vibrations are observed. Due to increase in vibrational rotational energies, due to increase in vibrational and rotational energies, due to increase in vibrational and rotational energies of the molecule, due to increase in the vibrational and rotational energies of the molecule, two types of fundamental vibrations are observed.
Two types of fundamental vibrations are observed due to increase in vibrational and rotational energies of the molecule. Due to increase in vibrational and rotational energies of the molecule, two types of fundamental vibrations are observed. First one is stretching vibrations. Stretching vibrations. The second one is bending vibrations. Bending vibrations. Yeah. Stretching vibrations. These are the vibrations or oscillating. Here vibrations or these are the vibrations along the line of bond. Oscillating along the. These are the vibration or oscillation. The vibration oscillation. These are the vibration along the line of bond. These are the vibration of oscillation. These are the vibration or oscillation along the line of bond. These are the vibration of oscillation along the line of the bond. In stretching vibrations, there occurs a change in bond length. In stretching vibrations, there occurs a change in bond length. In stretching vibrations, vibrations, there occurs in stretching vibrations, there occurs a change. There occurs a change in bond length. These are the vibrations or oscillation along the line of bond. These are the vibrations along the line of the bond. In stretching vibration, there occurs a change in bond length. In stretching vibrations, there occurs a change in the bond length. They occur at high energy. They occur at they occur at higher energy. They occur at higher energy. That is 4,000 to 1250 centimeter inverse. 4,000 to 1250 centimeter inverse. Just two types. It is two types. It is two types. And कौन सा पहला symmetric symmetrical stretching asymmetrical asymmetrical stretching. Symmetrical stretching क्या होता है? That atoms of a molecule either move away or towards the central atom but in same direction. ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है कि the atoms of a molecule, 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 the atoms of a molecule either move away okay, or
the atoms of a molecule either move away or towards the central atom, towards the central atom, but in same direction, but in same direction. The atoms of a molecule either move away from the atoms of a molecule either move away or towards the central atom, either move away or towards the central atom, but in same direction. Asymmetrical क्या होता है? One atom approach towards central atom while other departs from it. One atom approach towards central atom while other departs from it. While other departs from it. देखो ये था ना इंफ्रारेड है तो ये देखो सिमेट्रिकल हुआ सिमेट्रिक जी रेखा जी हाय हेलो वेलकम टू आवर स्ट्रीम ओ भगवान
So the second one is bending vibrations. Bending vibrations. So vibrations or oscillations are not along the line of bond. Vibrations, oscillations are not along the line of bond. Okay. These are also called as deformations. These are also called as deformations. Yeah. These are also called as deformations. In this bond angle, bond axis is altered. In this bond angle, bond axis is altered. Yeah. In this bond angle, if a bond axis is altered, occurs at low energy. Occurs at low energy, that is 1400, say 666 centimeter inverse, 400, sorry 1400, say 1400 say 666 centimeter inverse. ठीक है जी. So vibrations या फिर oscillations occur, oscillations has not, oscillations are not along line of bond, are not along the line of bond. These are also called as deformations. In this bond angle, bond axis is altered, occurs at low energy, that is 1400 to 666 at 8 as well. Bending vibration, these are two types. These are two types. First one is in plane bending, दूसरा out plane bending. In plane bending, दूसरा है out plane bending. Out plane bending. In plane bending में, in plane bending seizures and rocking, scissoring, rocking, scissoring and rocking, wagging and twisting, wagging and twisting, wagging and दूसरा twisting. ठीक है, wagging and twisting. देखो इन प्लेन बेंडिंग में इन प्लेन बेंडिंग में पहला सीजरिंग, इन प्लेन बेंडिंग में पहला है सीजरिंग. दिस इज इन प्लेन बेंडिंग, दिस इज इन प्लेन बेंडिंग, दिस इज इन प्लेन बेंडिंग सीजरिंग.
ऑब्वियसली इन प्लेन बेंडिंग होते हैं ना, इन प्लेन 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 में बेंडिंग जो होती है, दिस इज इन प्लेन बेंडिंग इन विच टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एट बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, in which two atoms approach each other, in which two atoms approach each other and bond angle decreases. ठीक है. So this is in plane bending. This is in plane bending in which two atoms approach each other and bond angle decreases. दूसरा है हमारा rocking. दूसरा rocking. ठीक है. Movement of atoms take place in the same direction. This is क्या होता है? This is in plane bend. This is in plane bending in which movement of atoms takes place in the same direction. ठीक है. This is in plane bending in which movement of atoms take place in the same direction. ठीक है. Okay. So yeah, this is in plane bending. In which movement of atoms takes place in the same direction. This is in plane bending in which the movement of atoms takes place in the same direction. Talking हो गया ना. B है दूसरा आउट प्लेन बेंडिंग. इन प्लेन बेंडिंग हो गया. आउट प्लेन बेंडिंग. आउट प्लेन बेंडिंग. आउट प्लेन बेंडिंग में क्या होता है? पहला है वैगिंग. दूसरा है ट्विस्टिंग. से वैगिंग में क्या है? Two atoms move two atoms out plane bending. तो atoms move to one side of the plane. Two atoms move to one side of the plane. They move up and down the plane. One atom moves above the plane, another moves down the plane. ठीक है. Out plane bending. So wagging. Two atoms move one side of the plane. Move to one side of the two atoms move to one side of the plane. Two atoms move to one side of the plane. Two atoms move to one side. Two atoms move to one side of the plane. Two atoms move to one side. Two atoms move to one side of the plane. Two atoms move to one side of the plane. Two atoms move to one side of the plane. They move up and down the plane. They move up and down on the plane. ठीक है. Two atoms move to one side of the plane. Two atoms move to one side of the plane. They move up and down the plane. They move up and down the plane. मतलब move to one side of the plane. They move up and they move up and down of the plane. They move up and down of the plane. Twisting. Twisting में क्या है? One atom moves above the plane, another atom moves below the plane. One atom moves above the plane and other atoms move below the plane. One atom moves
one atom moves above the plane and another atom moves below the plane. Okay, one atom moves above the plane and other atom moves below the plane. Yeah, two atoms move to side of the plane. One atom moves above the plane. One atom moves above the plane. One atom moves above the plane and another atom moves below the plane. Right. So one atom moves above the plane and another atom moves. One atom moves above the plane and another atom moves below the plane. ठीक है. Bending vibrations also are not along the line of bond. Bending vibrations क्या होता है? Bending vibrations होता है vibrations or oscillation are not along the line of bond. Are not along the line of bond. These are also called as deformations. In this bond angle, bond axis is altered, occurs at low energy, therefore 1600 centimeters. These are two types in plane bending or plane bending. In plane bending with scissoring and to rocking. क्या? Scissoring and rocking. Scissoring and rocking. तो scissoring में क्या है? Scissoring में this is in plane bending. Next two atoms approach each other at and bond angle decreases. In which two atoms approach each other and bond angle decreases. In which two atoms approach each other and bond angle decreases. ठीक है. This is rocking. क्या क्या rocking. ठीक है. ठीक है. This is rocking. Two atoms approach each other. In which two atoms approach each other ठीक है ना. Two atoms approach each other. This is the plane. से rocking है ना. Scissoring. मैं कह रहा हूँ पहले मैं यहाँ लिखूँगा ही भाई. पहले मैं लिखूँगा किसका. पहले सीजरिंग का ही लिखो यार. सीजरिंग का ही लिखो. सीजरिंग में क्या है? टू एटम्स अप्रोच ईच अदर. ठीक है. क्या है? टू एटम्स अप्रोच. सीजरिंग क्या है? दिस इज इन व्हिच टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. सीजरिंग. और twisting in this is in plane bending in which movement of atoms takes place in the same direction. This is in plane bending in which the movement of atoms takes place in the same direction. क्या takes place in the same direction? अगर ऐसे जा रहा है ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है ऐसे जाएगा. ठीक है. This is twisting. Next is rocking. This is rocking. रॉकिंग क्या होता है? ये होता है
रॉकिंग होता है, ठीक है। तीसरा हमारा वैगिंग, क्या हमारा वैगिंग है, वैगिंग, ठीक है, वैगिंग। Two items move to one side of the plane. Two items move to one side of the plane. They move up and down the plane. They move to one side of the plane. ठीक, आउट ऑफ प्लेन बेंड, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। कैसा कुछ है, वैगिंग एंड लास्ट वन ट्विस्टिंग। Twisting, this is twisting. What this is twisting, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये तो सेम है ना। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब वही भाई यार, दिस इज एंड पेंडिंग एंड विद मूवमेंट एटम टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन, तो अलग बात है। आउटलाइन बेंडिंग क्या होता है, आउटलाइन बेंडिंग की बात किया जाए तो इसमें होता है वैगिंग, टू आइटम्स मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन, टू आइटम्स मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन। So two atoms moves to one side of the plane, ठीक है। Two atoms moves to one side of the plane. Two atoms moves to one side of the plane. They move up and down the plane. एक side of the plane, एक side में up and down. One moves above the plane, another moves down the plane. Obviously, up the plane and down the plane. The one atom moves above the plane and down the plane. One side of the plane में up down करते हैं, एक प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे। That is like this we can denote, and we have also denoted it. Wagging, twisting, scissoring, rocking, wagging, twisting. Scissoring में अप्रोच करते हैं एटम्स along the line of one of axis, ठीक है। और रॉकिंग में क्या होता है, एक ही साइड मूव करते हैं। और वैगिंग में क्या होता है, एक साइड में अप डाउन करते हैं। और ट्विस्टिंग में क्या होता है, above the plane, down the plane. This one atom moves above the plane and other atom moves down the plane, below the plane. One atom moves above the plane and another moves below the plane. Right. And now next thing is what types of electrons are involved in UV visible spectroscopy? What types of question number question number 1 5 इसका। What types of electron transitions are involved? What types of electronic transitions are involved? What type of electronic transitions are involved in? What type of electron transitions are involved in UV
visible spectroscopy. What if electron is involved in visible spectroscopy? Explain the absorption and intensity shift. Explain the absorption and intensity. Explain the absorption and intensity shift in the UV spectroscopy and support with examples in the UV spectroscopy and support with examples. What type of electron transitions are involved in UV visible spectroscopy? Explain the absorption and intensity shift in the UV spectroscopy and support with examples. So this question might be something long. अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी ना यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है एनर्जी this is UV. Explain why types of organization why what types of electronics involved in visual spectroscopy? What types of electronics involved in visual spectroscopy intensity shift in the UV spectroscopy and support with examples? So in what what type of electronic transition involved in UV visual spectroscopy? In UV spectroscopy, when a molecule absorbs EMR of UV range, is its electron undergoes transition. Okay. When in UV visible spectroscopy, when a molecule absorbs EMR of UV range, its electron undergo transition. When a sample absorbs UV light, valence electrons are promoted to higher energy levels in accordance with the frequency of absorbed light. The UV spectrum of a compound gives information about its electronic structure. In other words, a sample with pi electrons with pi bonds, with lone pairs with conjugations will show characteristics absorption of UV light. When a molecule is subjected to UV range, a spectrum is obtained in the spectrophotometer. The spectrum consists of bands, which are the plots between the absorbed light and wavelength. Through the study of these bands, we can elucidate the molecular structure. UV region is divided into near UV region, far UV region, and the vacuum UV region. अच्छा, so near UV region क्या था? Wavelength region, ठीक है. Wavelength region near to visible region, that is 250. Wavelength region nearer to visible region, that is lambda to 250 nanometer to 400 nanometer. Wavelength region farther to the visible region, that is 190 nanometer to 250 nanometer. Vacuum क्या होता है? That is less than 190 nanometer. So it's basically wavelength region nearer to the visible region. सबसे ज़्यादा nearer कौन सा है? इसकी लैम्डा इतना है, इसकी लैम्डा इतना, इसकी लैम्डा इससे भी कम है, इससे भी कम है.
तो ऑब्वियसली वैक्यूम यूवी जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा होगा, ठीक है। नाउ electron transition. Whatever electron transitions involve UV visible spectroscopic when the absorption of transition. The absorption of UV and visible light is through the transition of an electron in the molecule from lower to higher. These various transitions absorption compound. The different types of electronic electrons found in molecules are sigma electrons, pi electrons, and electrons. And electrons. Sigma electrons, these are the found in saturated compounds like alkanes. They are highly stable and very difficult to move. Pi electrons, they are found in saturated compounds like alkenes and alkynes. Less stable and sigma electrons, as they are have more energy in the comparison to them. These are non-bonding. These are non-bonding electrons which do not participate in bonding. They are found as lone pair. They have highest amount of energy. Electronic transitions. Sigma sigma star, pi pi star, and sigma star. Electron transition. The absorption of UV and visible light is through the transition of an electron in the molecule from lower to higher energy molecule orbital. Okay, this is known as electron transition. The absorption of UV and visible light is through the transition of an electron in the molecule from low to high energy molecule orbital. The various electronic transitions object to the. ठीक है. These are found in unsaturated compounds like alkanes and alkynes, less stable and sigma electrons as they have more energy in comparison to them. These are non-bonding electrons which do not participate in bonding. They are found as lone pairs. They have highest amount of energy. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस the electron transitions that are involved with are the electronic transitions that are involved in UV visible spectroscopy are as follows. The electronic transitions that are involved in UV visible spectroscopy. The electronic transitions that are involved in UV visible spectroscopy are as follows. First one is first one is sigma star transition. Sigma star transition. Sigma star transition. Sigma electron from a sigma bonding orbital is excited to corresponding anti-bonding orbital. ठीक है. पहला सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है? सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में होगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल
Sigma electron from sigma bonding orbital is excited to corresponding antibonding orbital sigma star is excited to corresponding antibonding orbital excited to corresponding antibonding orbital antibonding orbital sigma star. Sigma electron from sigma bonding orbital is excited to corresponding antibonding orbital sigma star. The energy required is large for this transition. These transitions can be found in alkanes like the energy required is large for this transition. The energy required is large for this transition. The energy required is large for this transition. Full stop. These transitions can be found in alkanes. These transitions can be found in alkanes. These transitions. The energy required is large for this transition. This transition the energy required is large. These transitions can be found in alkanes. These transitions can be found in alkanes. And these transitions can be found in alkanes. These transitions can be found in alkanes. These transitions can be found in alkanes like methane, CH4. CH4 has CH bond only. Has CH bond only, and can undergo sigma star transition and shows absorbance maxima at 125 nanometer. Okay. These transitions can be found in alkanes like CH4 has CH bond only and can undergo sigma star transitions and so absorbance maxima at 125 nanometer. Okay. And shows absorbance maxima at 125 nanometer. दूसरा है पाई स्टार ट्रांजिशन. दूसरा है पाई स्टार ट्रांजिशन. ठीक है. दूसरा है पाई स्टार ट्रांजिशन. अच्छा, पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल is excited to corresponding anti-bonding orbital. ठीक है. कंपाउंड्स ऑफ दिस टाइप. ठीक है, बढ़िया है. ठीक है. सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो गया. पाई स्टार पाई इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक्साइटेड टू करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार. पाई इन पाई इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल. पाई इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल. Pi electron in bonding orbital is excited to corresponding
is excited to corresponding antibody. The electron in a bonding orbital is excited to pi electron antibonding orbital. Pi electron in a bonding orbital. Pi electron in a bonding orbital is excited to corresponding antibonding orbital. Pi star orbital. Pi star. pi star ठीक है. Okay. So compounds containing multiple bonds like alkenes, alkynes, carbonyl, nitrile, aromatic compounds, etc. undergo pi star transition. Examples: alkenes generally absorb in the region. भगवान पेन मेरी खत्म हो गई. मैं जब बेग का रुकने न दिया. pi star transitions. ठीक है. फिर n pi sigma star n pi star n pi star and n and sigma pi star or pi sigma star transition. These different transitions are forbidden transition and are only theoretically possible. Thus only n pi star transitions of absorption in region above 20 nanometer which can be observed by a visible spectrophotometer. पेन खत्म हो गई अब क्या ही कहूँ यार. मैं जब भी रुका रुकने न. ये 3 पेन खत्म हो गई. क्या क्या ब्लैक पेन से लिखूँ क्या? लेट मी सी किया कुछ है तो नहीं. कोई पेन मिल जाती तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर करते हैं. ब्लैक पेन ही है. रुको पेन लेकर आता हूँ.
Did pause it. जब तक दिमाग इधर उधर भटक के भटकेगा, ठंडी लगेगी पैर में, तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में। लाल का फिर मंडे को। कल हाँ मंडे को। पहले मंडे। मैं जंजीर मेरा दिल मेरा दिया। आज ठंडी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा दिल्ली के कंपेरिजन में। कभी ठंडी लग रही है क्या थोड़ा। ओके, सो ब्लू पेन तो नहीं मिली, बट रेड पेन मिली है, इससे लिखते हैं। कितने लोग देखते हैं? कितने लोग देखते हैं? Pi star transition. Pi electrons in a bonding orbital is excited to corresponding anti-bonding orbital pi star. Electrons in पेन ही खत्म है। इसको चेंज करता हूँ। मैं संधीरा लेकर आऊँगी।
pi electrons in bonding orbital. Bonding orbital is excited to pi star antibonding orbital. Pi electrons in bonding orbital. Pi electrons in bonding orbital is excited to corresponding antibonding orbital. Is excited to corresponding antibonding orbital. Antibonding orbital. Pi star. Pi electrons in bonding orbital is excited to corresponding antibonding orbital pi star. And compounds containing multiple bonds like alkenes, alkynes, carbonyl, aromatic compounds, etc. undergo pi star transition. Compounds containing compound containing multiple bonds like alkenes, alkynes, carbonyl, nitriles, aromatic compound, etc. undergo nitriles, aromatic compound, carbonyl undergo pi star transition. Undergo pi star transition. Pi star transition. Example: alkenes generally absorb in the region. Example: alkenes generally absorb in the region 172 25 nanometer. Alkenes generally absorb in the region. Alkenes generally absorb in the region. Alkenes generally absorb in the region. Alkenes generally absorb in the region 170 to 205 nanometer. Alkenes generally absorb in the region. Alkenes generally absorb in the region 170 to 205 nanometer. Pi electrons in bonding orbital is excited to corresponding to bonding orbital pi star. Pi electrons in a bonding orbital is excited to corresponding antibonding orbital pi star. Compounds containing multiple bonds like alkenes, alkynes, carbonyl, nitrile, aromatic compounds undergo pi star transitions. Examples: alkenes generally absorb in the region 170 to 25 nanometer. N sigma star transition. N sigma star transition में क्या है? Saturated compounds containing atoms with lone pair of electrons like saturated compounds containing atoms with lone pair. Saturated compounds containing saturated compounds containing atoms with lone pair. Containing atoms with lone pairs.
Saturated compounds containing atoms with lone pair of electrons. Saturated compounds containing atoms with lone pair of electrons like oxygen, nitrogen, sulfur, and halogen are capable of capable of n sigma star transition to saturated compounds containing atoms with lone pair of electrons like oxygen, nitrogen, sulfur, and halogen are capable of n sigma star transition. These transitions usually require less energy than these transitions usually requires these transitions usually requires less energy than sigma star transitions. These transitions usually requires less energy than sigma star transitions. Okay. चौथा है हमारा n pi star transitions. ठीक है. n pi star transition. An electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding orbital pi star orbital. Pi star orbital. So an electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding sigma star orbital. This is the compounds containing double involving heteroatoms undergo such transitions and sigma stars require minimum energy and so absorption at longer wavelength around 10 nanometer. ठीक है. क्या देखो an electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi star orbital. An electron from non-bonding orbital electron from G. Robin G. Bye, welcome to our stream. An electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi star orbital. An electron from non-bonding orbital is promoted to anti an electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi star orbital. ठीक है. What is your name? My name is Ripesh Singh. Ripesh Singh. An electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi star orbital. ठीक है. Compounds containing double bond involving heteroatoms ठीक है undergo such transitions. Compounds containing double bonds double bonds एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है? जी अनुसोज, वेलकम टू आवर स्ट्रीम. एंड what is your age? I'm 19 years old, and on 11 March I will be 20 years old. And exam कब से start है? Exam is started from 19 February, the final semester exams, and
Now the PUT is running. That is a pre-university test, like pre-board, like PUT. Okay. So compounds containing double bonds involving compounds containing double bond involving heteroatoms. What do you study and read? I am a I am a BTech college student today. I am currently pursuing my BTech, so I study for my semester exams. Okay, okay. So compounds containing double bonds involving heteroatoms. Compound containing double bonds involving involving heteroatoms. C double bond O, C triple bond N, N double bond O. Undergo such transition. ठीक है बिल्कुल. Compounds containing double bonds involving heteroatoms, that is C double bond O, C triple bond N double bond O, undergo such transitions. ठीक है. N pi star transitions require minimum energy and so absorption at longer wavelength. ठीक है. N pi star transition requires minimum energy. The third point अगर बात किया जाए तो N pi star requires minimum energy ठीक है. N pi star requires minimum energy in pi star transition. In pi star transitions, N pi star transitions require minimum energy and so absorption at longer wavelength. And so absorption at longer wavelength. Now, so absorption at longer wavelength around 300 nanometer. Do you know complex number? Yes, I know complex number. A plus iota v. Iota is equal to root minus 1. Iota का स्क्वायर is minus 1. Iota के power 4 is equal to 1. Please give definition of complex number. Bro, it is available on internet. ठीक है, वहाँ से अच्छी definition मिल जाएगी. बट मैं बता रहा हूँ, a number which can be written in the form of a plus iota v, where a is a real part and iota is an imaginary part. Okay, are called complex numbers. मैं जब भी गिरा. N pi star transitions requires minimum energy and so absorption at longer wavelength around 300 nanometer. N pi star transition requires minimum energy and so absorption at longer wavelength around 300 nanometer. अच्छा. N pi star transition and pi sigma star transitions. These electron transitions are forbidden transitions and are only theoretically possible. I hope that the definition of complex number is now clear to you, Mr. Robin. Okay, yeah. So it's a sigma pi star transition. Sigma pi star transition.
and pi sigma star transition and pi sigma star transition. Sigma pi star transition and pi sigma star transition. Sigma pi star transition and pi sigma star transition. These electronic transitions are forbidden transitions. These electronic transition are forbidden. Sigma pi star transition and pi sigma star transitions. These electronic transitions are forbidden transitions and are only theoretically possible. Transitions. Why are you saying this? These electronic transitions are forbidden transitions. These electronic transitions are these electronic transitions are forbidden transition. These electronic transitions are forbidden transitions and are only theoretically possible and are only theoretically possible. ठीक है? ऐसे कह सकते हैं पाई सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड पाई सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस these transitions are forbidden transition and all other ठीक है. तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर just for understanding that is sigma pi star transitions and pi sigma star transitions are only theoretically possible. ठीक है. Sigma pi star transition, pi sigma star transitions are only theoretically possible. Thus only in sigma pi star and pi transition are so the option reason. ठीक है. Thus only n pi star. ठीक है. Thus only n pi star and thus only n pi star and thus only n pi star and pi star transitions solve the option and reason above to a nanometer which can be observed UV visible spectrum. Please give definition is complex number. Don't use Hindi. Okay. Okay. In your like you are using Indian flag and you don't know Hindi. Okay, no problem. Okay, I will reply in English. Okay. Number two. Chemistry very first year.
जी डायरेक्ट जी, वेलकम टू आवर स्ट्रीम भाई. Your collection of emoji is same and best. Sigma pi star and pi sigma star answers are only theoretically possible. Thus only n sigma star and pi star, n pi star and pi star. क्या बढ़िया. मैं भीगेगा गिरने ना गया. Thus only n pi star and pi star. Electronic transitions show absorption in region above 20 nanometer, which can be observed in individual spectrometer. Thus, only in pi star and pi star electron transitions. Transitions. So, absorption in region above 200 nanometer, which can be observed by visual spectrometer, which can be observed by spectrophotometer. ठीक है. Spectrophotometer. Okay. Thirty possible. That's enough. Okay. And we'll try. This figure is very important. So just try it. Right. Cool. देखो सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार ऐसे होगा. देखो सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार ऐसे हो जाएगा. ठीक है. क्या होगा देखो फिर से. सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार. सिग्मा मतलब बॉन्डिंग, पाई is also bonding, non bonding, anti bonding, also anti bonding. ठीक. और जो एनर्जी का इंक्रीजिंग लेवल है लाइक दिस एनर्जी. ठीक है. देखो देखो इसमें है क्या. इसमें है कि पहला हमारा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस. क्या है पहला है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. दूसरा है पाई मतलब हाँ दूसरा है सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन. सिग्मा से ठीक है. सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन. एक है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दूसरा है सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन. और ये राइट सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और दूसरा है सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन. ठीक है. सिग्मा से
सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दूसरा है सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन, और फिर तीसरा है पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और फिर एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यूँ एंड एक हो जाएगा ऐसे कुछ, हो जाएगा ऐसा कुछ। होने लगा है जो है इश्क या है वो, ये हो क्या? इसको देखो, तो नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो नीचे आते हैं ना भाई। होने लगा है जो यूँ, फिर इसको देखो पूरा हो जाएगा, ऐसे कैसे स्टार, फिर 10 10 10। अच्छा ये भी देखो, ये पूरा नहीं गया तो अलग हो जाएगा ना, कर सकता हूँ लाइक दिस, 10 10 10। इसके बाद फिर 10, यूँ यूँ यूँ, यूँ सिग्मा से एन, सिग्मा से एन नहीं है ना, सिग्मा एन ट्रांजिशन है नहीं ना, सिग्मा स्टार एन स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। दूसरा है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, और फिर सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, एन पाई स्टार ट्रांजिशन और सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन ना। क्या हो गया? सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार, एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन। क्या एन, देखो सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, फिर के बाद पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, फिर पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, फिर सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। हो गया, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया। अब एन पाई स्टार ट्रांजिशन और एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन पाई स्टार ट्रांजिशन और क्या है, एन पाई स्टार ट्रांजिशन, और फिर एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और फिर एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर चार हो गया हमारा, दो दो जो है हमारा वो वैलिड नहीं है। कौन सा है? सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन, क्या हो गया? सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, क्या है क्या? सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन is not valid, and pi sigma star transition not valid, pi sigma star transition not valid. This is pi sigma star transition, sigma sigma star, pi pi star। ठीक है, एन सिग्मा स्टार एन पाई स्टार, एक दो तीन चार तो हो गया, छः हो गए, छः बजा है, पाई सिग्मा स्टार और सिग्मा पाई स्टार। सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, ठीक है जी।
फॉरबिडन ट्रांजिशंस। क्या देखो, हम लोग देख रहे हैं कि पाई सिग्मा स्टार और सिग्मा से पाई स्टार, फॉरबिडन ट्रांजिशंस, फॉरबिडन ट्रांजिशंस होने लगा है जो है इश्क ना है वो। Explain the absorption and intensity shift. Explain the absorption and intensity shift in the UV spectroscopy. Support with examples. Terms used in UV spectrometry are oxychrome. Absorption and intensity shift. Explain the absorption and intensity shift in the UV spectroscopy. Absorption and intensity shift. Hmm. Explain the absorption and intensity shift. Absorption and intensity shift. Absorption absorption and intensity shift. Can I get a cheeseburger with no cheese? Mr. Lambo. This is not a right place to say this. Go in a hotel or at a cafe, just then say this. Okay. So absorption and intensity shift. एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट के बारे में बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, दिस, ठीक है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सो, हिप्सो की हाइपो, हाइपर हाइपो, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, ठीक है। तो ऐसे होगा, देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा, सॉरी सॉरी, नॉर्मल नॉर्मल होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर ऐसा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। No, that is electronic light and LED light especially. Okay, and yeah, absorption, absorption, that is a और इंटेंसिटी या फिर वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ ये है, ठीक है। एंड दिस इज लैम्डा मैक्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, देखो दिस इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, दिस इज हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, और रेड शिफ्ट,
और इधर हो गया ब्लू शिफ्ट। ठीक है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। दिस इज एब्जॉर्बेंस, दिस इज द वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, बाथोक्रोमिक शिफ्ट और ये सब क्या था भाई? अगर मैं यहाँ देखता हूँ, दिस इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अच्छा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, देखो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसे हम लोग कह सकते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कह सकते हैं और पाथोक्रोमिक शिफ्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। क्या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसे हम लोग कह सकते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कह सकते हैं और इसे हम लोग कह सकते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, सॉरी बाथोक्रोमिक शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, देखो ये बाथोक्रोमिक। ठीक है। ठीक है। रेड शिफ्ट को हम लोग कह सकते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट को हम लोग कह सकते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है। तो उसको हम डिफाइन यहाँ पर किया गया बढ़िया तरीके से, दैट इज अ बाथोक्रोमिक शिफ्ट, फिर रेड शिफ्ट, बाथोक्रोमिक। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। फिर पहले तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? व्हेन एब्जॉर्प्शन, व्हेन मैक्सिमम, दैट इज लैम्डा मैक्स ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, शिफ्ट टू longer wavelength, it is known as bathochromic shift। ठीक है। और red shift, the effect is due to the presence of an oxochrome or by the change of solvent, example an oxochrome group like OH or CH3 cause absorption at compound at longer wavelength. In alkaline medium, p-nitrophenol shows red shift because negatively charged oxygen localizes more effectively than the unshared pair effect on hypsochromic shift पे लिखते हैं। ठीक है। ब्लू शिफ्ट, when absorption lambda makes up compound shifts to shorter wavelength। ठीक है। पहला हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, व्हाट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इसे हम लोग कह सकते हैं ब्लू शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग कह सकते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, दैट्स ब्लू शिफ्ट। सो when absorption maxima, that is lambda max of a compound, when absorption maxima, maxima, that is lambda max of a compound, shifts to shorter wavelength, it is known as hypsochromic shift or blue shift। hypsochromic shift और hypsochromic shift और blue shift। ठीक है। when absorption maximum of a compound shifts to shorter wavelength, and absorption maximum of a compound shifts to shorter wavelength, it is known as hypsochromic shift or blue shift। It is known as hypsochromic shift or blue shift. The effect is due to the removal of conjugation or oxochrome or by the exchange of solvent. Aniline shows blue shift in acidic medium, it loses conjugation। ठीक है। Aniline shows blue shift in acidic medium। ठीक है। It loses conjugation।
aniline source blue shift and say video, ठीक है. Like this is aniline. This is what this is aniline. NH2. ठीक है aniline. Aniline है ठीक है aniline. Acidic medium H plus minus of Cl सिर्फ ऐसे क्या हो जाएगा हमारे NH. What are you saying, Mr. Lambo? There is no any meaning of the thing that you're saying here. Ji Vandana. Vandana Ji, welcome to our stream. And what are you preparing for? I'm I'm just preparing for my semester exams. I'm a BTech student, so I'm just preparing for my semester exams. That's all. Okay. So NH3 plus Cl minus ऐसे बन जाएगा ठीक है. H3 plus Cl minus ऐसे हो जाएगा aniline. 280 से 265 लैम्डा मैक्स इसका है 280 नैनोमीटर और इसका लैम्डा मैक्स हो जाएगा 265 नैनोमीटर. ठीक है. From here you are. Thanks for the concern. I am from actually I belong to Sultanpur, that is UP, and but now I am pursuing my BTech from the Greater Noida. So currently I am in Greater Noida. Okay. So when absorption maxima of a compound shifts to shorter wavelength, it is known as hypsochromic shift or blue shift. Aniline shows blue shift in acidic medium. Aniline shows blue shift in acidic medium. That is aniline. This is blue shift हो गया. Okay, so you are from Maharashtra, Aurangabad. Can you give any tip for class 10th? Okay, 10th board. Boards are in 2 weeks. Okay, so the most important suggestion that I will give you is that if you haven't solved the PYQs till yet, just solve it. And in the last week of your exam, just solve the sample papers and uh, and just learn how to approach the questions. From here you should start the questions to solve. Okay, and now just solve the PYQs, and when 1 week remain, just solve the sample papers with the time bound limit. Okay, this will definitely increase your marks.
And before sleeping, just revise your short notes if you have made it. And after waking up, just revise it. That's all. चैप्टर कंप्लीट नहीं है, रिवाइज करना है। ओके, कुछ तो कंप्लीट होगा भाई। देखो, अगर चैप्टर नहीं कंप्लीट है तो कंप्लीट मतलब ऐसे वन शॉट देख लो, आइडिया ले लो बस, ठीक है। और आइडिया लेने के बाद पीवाई क्यूज़ करो, जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट रेलिवेंट पीवाई क्यूज़ हैं उसको करो, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। तो पीवाई क्यूज़ करो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि खुद से ही करो। अगर नहीं पढ़े हो चैप्टर तो पीवाई क्यूज़ लो, उसे लिखो, याद कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी सब पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। पीवाई क्यूज़ में सेम एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना। हर सब्जेक्ट के कितने करूँ? पहले बताओ तुम कितना पढ़े हो अभी तक, तो तुम्हारा टारगेट कितना है, कितना पढ़े हो, सब कुछ के हिसाब से ना प्लान बनता है। शुक्र शिफ्ट होता है, ठीक है। इस तरह है बात हो क्रमिक शिफ्ट। ओके, monochromic shift, display shift, when absorption maximum of compound shift, longer wavelength। मुझे चैप्टर तो आता है। ओके, पर साइंस और एसएसटी जैसे जो जो सब्जेक्ट हैं उससे रिवाइज तो करना होगा ही। साइंस और एसएसटी, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों है ना, और एसएसटी। जी बिल्कुल। देखो, एसएसटी में क्या करो, बस अगर तुम्हें कहानी पता है, ठीक है, जस्ट स्टोरी याद कर लो। और मतलब एक बार ओवरव्यू ले लो क्या क्या टॉपिक्स हैं, सिर्फ टॉपिक्स लिख लो। और उसके बारे में थोड़ा जैसे लिख लो टॉपिक्स, फिर खुद से थोड़ा मतलब एक बार लेक्चर देख लेना, टॉपिक नोट कर लेना, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बना लेना। फिर टॉपिक को देखकर तुम्हारे मन में क्या आता है, ठीक है, उसको उसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है। और उसके बाद फिर पी वाई क्यूज़ ले लो, पी वाई क्यूज़ ले लो, जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो क्या होता है ना, एग्ज़ाम्स में जब बैठोगे ना तो एग्जैक्ट क्वेश्चन सब मिलते हैं। देखो, तुम पढ़े हो पूरा चैप्टर, फ़ायदा क्या हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन आने वाला है ना, है ना। तो उस क्वेश्चन को तैयार कर लो ना, क्या ज़रूरत पूरा चैप्टर पढ़ने की, अगर टाइम कम है तो, ना। ऐसे कभी कभी होता है कि हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लिए और क्वेश्चन तो एक ही टॉपिक से आते हैं ना, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। उसके बाद जैसे टेंथ ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद इलेवंथ आ जाएगा। तो ऐसा करो ना, पी वाई, मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखो सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो पी वाई क्यूज़ होते हैं सबसे मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें भी देखो बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स करा रहे होंगे क्वेश्चंस, जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं वही करो बस, ठीक है। बाकी आइडिया होना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग भी कर देना, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन छोड़ना मत, बस। बस क्या, देखो आज से ही अगर एसएसटी और साइंस की बात है ना, देखो साइंस में देखो यार, मतलब देखो मैं तुम्हें ऐसे रिवाइज करा सकता हूँ। देखो मैं तुम्हें ऐसे बताऊँ, मुझे तो अभी ये देखो
साइंस का फर्स्ट चैप्टर में देखो यार, बहुत कुछ है। रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन है ना, उसमें होता है देखो मैं बता दूँ क्या क्या याद कर लो। फर्स्ट चैप्टर में याद कर लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी याद कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेना। 1/v इज इक्वल टू 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू जो था उसको याद कर लेना। मिरर फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। लेंस फॉर्मूला याद कर लो। इससे 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 न्यूमेरिकल्स देख लेना, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। देखो इससे मतलब कुछ मतलब फिक्स क्वेश्चन होते हैं यार, मतलब फिक्स क्वेश्चन होते हैं, आएंगे ही आएंगे, उसको पढ़ लो ना। फर्स्ट केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है, हाँ मतलब केमिस्ट्री में फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। हम्म, मैं सिर्फ 3 घंटे पढ़ता हूँ बस। 3 घंटे पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। बाकी फुल डे थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ ना, बहुत सारी चीज़ों को, कोडिंग भी करनी रहती है तो। लैम्बो जी किस लैंग्वेज में बोल रहे हो यार? टेंथ के बाद सीए करने की सोच रहे हो तो कॉमर्स ले लेना, और क्या। कॉमर्स ले लेना, इसके बाद मेहनत करना, और क्या ही करोगे। अभी इतना टेंशन ना लो। बिल्कुल बिल्कुल, स्कोप सब चीज़ में है भाई। कौन कहा साइंस में स्कोप नहीं है? सबसे ज़्यादा स्कोप साइंस में ही है। तो कौन सा सीए में बहुत ज़्यादा चांस है? सीए में भी तो कम चांसेस है। अल्टीमेटली तुम्हारा हार्डवर्क काम आएगा भाई। तो कितना हार्डवर्क कर सकते हो। जी प्रतिमा कुमारी जी, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। चलिए फिर मिलते हैं कभी। थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है भाई, बाय बाय। वंदना जी, बाय बाय। बस भी भाई कुछ करो, ठीक है। सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व कर लेना याद से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, ठीक है भाई, बाय। प्रतिमा कुमारी जी, मैं 4:30 बजे से पढ़ने बैठा हूँ, और मतलब डेली पढ़ता हूँ 4:30 से 7:30। सो टुडे था डे 76। फिर सो मैं भी पढ़ लेता हूँ ना, बात तो क्रमिक शिफ्ट करता है। Navigation maximum of a compound shift to longer wavelength when इंस्टा वैसे अभी नहीं चलाता, बट हाँ वो मतलब चैनल के बायो में शायद है, उसका उसकी लिंक है। ठीक है, फैन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ अ कंपाउंड, 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 that is going to absorption maximum of a compound, absorption maximum, that is lambda max of a compound shifts to longer wavelength. Absorption maximum of a compound shifts to longer wavelength. It is orthochromic shift or red shift. And absorption maximum of compound shift to longer wavelength. It is known as orthochromic or red shift. The effect is used presence of oxychrome by the change of solvent. Look like OH, H3 carbon, P nitrophenol, nitrophenol, shows red shift. Because negatively charged oxygen decouples more rapidly than the answer. ठीक है, in alkaline medium, para-nitrophenol shows red shift in alkaline medium. In alkaline medium, in alkaline medium, para-nitrophenol shows red shift. Para-nitrophenol shows red shift. In alkaline medium, para-nitrophenol shows red shift. क्या नॉट ओ एच रहता है, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम ओ एच माइनस, माइनस, ठीक है। पैरानाइट्रोफेनॉल shows red shift. And third one is हेप्सोक्रोमिक, या फिर हेप्सोक्रोमिक हो गया, हाइपोक्रोमिक हो गया, हाइपोक्रोमिक और हेप्सोपाथो। अब हम लोग हाइपोक्रोमिक और हेप्सोक्रोमिक कर लेते हैं। हाँ, तीसरा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट है कि हाइपोक्रोमिक शिफ्ट? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट ना, हाँ ठीक है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट एन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, ठीक है। वेन तो बड़ा हो जा रहा है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, in absorption intensity, that is E of a compound is increased, of a compound is increased, absorption intensity of a compound is, of a compound
is increased. When absorption intensity of a compound is increased, absorption intensity of a compound is increased, it is known as it is known as hyperchromic shift. Hyperchromic shift. Hyperchromic shift. Yeah. When absorption intensity of a compound is increased. When absorption intensity of a compound is increased, when absorption intensity of a compound is increased, it is known as hyperchromic shift. If oxochrome is introduced to the compound, the intensity of absorption increases. If oxochrome is introduced to the compound, the intensity of absorption increases. Absorption increases. Yeah. Hmm. When oxochrome is introduced to the compound, the intensity of absorption increases. Oxochrome, this is pyridine. This is what this is pyridine. This is pyridine, and this is also pyridine. The CH3, 2-methyl pyridine. 2-methyl pyridine. Okay. Okay. 3.60. So the hyperchromic is the hyperchromic shift. When absorption intensity of compound is decreased. When absorption intensity of a compound is decreased. It is known as hypochromic shift. When absorption intensity of a compound is decreased, it is known as hypochromic shift. When absorption intensity of a compound is decreased, it is known as hypochromic shift. It occurs when the symmetry of the compound is disturbed. It occurs when the symmetry of the compound is disturbed. Okay. It occurs when absorption intensity of a compound is decreased. It is known as hypochromic shift intensity. Okay. It occurs when the symmetry of the compound is disturbed. इसमें हाइपोक्रोम इंट्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है. Naphthalene, pH, naphthalene, and ठीक है. 2-methyl naphthalene. ठीक है. देखो factors affecting UV spectroscopy solvents, applicants of physical infrared. ठीक है, खत्म बात. बस इतना लिखता हूँ. 7, 8, 9, 2, 4, 2, 6, 7 लेकिन थोड़ी कैंसिल लिखा जाएगा यार. इसको बहुत काट पीट के छोटा करना होगा. ऑब्वियसली 7 पेज में थोड़ा लिखूंगा कैंसर यार.
What type of electronic transistors are involved in UV visible spectroscopy? What type of electronic transistors are involved in UV visible spectroscopy? The electron transitions that involved in visible spectroscopy are as follows. For sigma sigma transitions, electron sigma electron from sigma bonding orbital is excited to corresponding sigma star bond sigma star anti-bonding orbital. ठीक है. Sigma electron from sigma bonding orbital sigma electron from sigma bonding orbital is excited to sigma star anti-bonding orbital. Sigma star corresponding sigma star anti-bonding orbital. The energy required is large for this transition. Those transitions can be found in the alkanes like यहाँ ठीक है. Saturated compounds सोल्स ट्रांजिशन कर सकते हैं. ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, एनर्जी कर सकता है. Pi star transition, the electrons in bonding orbital is excited to corresponding antibonding orbital pi star. Pi electrons in bonding orbital is excited to corresponding antibonding orbital pi star. And saturated compounds in antibonding orbital, ठीक है, an electron from antibonding orbital is promoted to antibonding sigma star orbital. An electron from non-bonding या फिर non-bonding orbital is promoted to antibonding pi star orbital. Compounds containing double bonds involving heteroatoms, ठीक है सर, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा भाई, इसे नहीं याद करना है यार, इसको याद कर लो. इसको लिखो सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार एन सिग्मा स्टार एन पाई स्टार. ठीक है. इसके बाद फिर एन सिग्मा स्टार, फिर सॉरी सिग्मा पाई स्टार पाई सिग्मा स्टार. दिस इज फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएंगे. ठीक है. इसका तुम थोड़ा सा लिखना, इतना नहीं लिखना. आप जाकर इंटेंसिटी शिफ्ट एक ग्राफ बना देना. ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट को कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट को कहते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. ठीक है. एब्जॉर्प्शन नहीं, इंटेंसिटी लैम्डा मैक्स को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं. एंड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को कंपाउंड शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ एंड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को कंपाउंड शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ known as hypsochromic shift. Example aniline. In absorption acidic medium में in absorption of maximum of a compound shift to longer wavelength. Bathochromic shift, red shift, when that is alkaline medium para-nitrophenol. Hyperchromic shift when absorption intensity of a compound is increased. When absorption intensity of a compound is increased, it is known as hypochromic shift. In absorption it is introduced to the compound, the intensity of absorption increases. ठीक है. In oxychrome, if oxychrome is introduced to the compound, the intensity of reaction increases. pyridine ले लो, 2 methyl pyridine ले लो. नैप्थलीन 2 methyl नैप्थलीन इसमें हो जाएगा. हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? When absorption intensity of a compound is decreased, it is not a hypochromic shift. एक समझ का सिमिलर फ्रेगमेंट डिस्टर्ब. ठीक है. खत्म बात. Okay, everyone. So we have just finally completed our 3 hours of study. I hope you have also completed it with me. And thanks for watching. ठीक है. गुड मॉर्निंग. हैव अ वंडरफुल डे. बाय. मिलते हैं कल. तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो. गुड नाइट. सॉरी, गुड मॉर्निंग. बाय बाय बाय.